My name is Hameed Asghar, and on behalf of Institute of Freelancing and Peer Finishing School, I welcome you all. Based upon yesterday's lecture, thank you very much. Walaikum salam. I hope that you can see my screen and you can hear me properly. Please respond in the chat box so that we could continue our regular session. All right, perfect. Thanks a lot. Sure, let's move ahead. There was quite a bit confusion as far as the previous class is concerned. I was receiving a couple of messages that some of the tools which we have gone through yesterday there that was not actually clear. So I just thought कि मैं जल्दी से I should give you a recap first and then we can continue our tools section so that in detail हम step by step करके सबको go through करते रहें. So let's get started. As you all know, we are working on the Photoshop, and Photoshop, any of the version of the Photoshop which you're using, that is something which is quite obvious that you can take these practice classes and practice of these tools. You can continue with your own Photoshop version, whatever the version which you're using. Actually, as far as this first tool is concerned, जो कि students को समझ नहीं आया, that was the patch tool. Let me tell you, patch tool is so simple. There's nothing as specific. लेकिन what you have to do is clearly that it's better that first you have to have some space. Let's suppose if I'm going to select this specific area, or let's suppose this area, और अगर मैं इसको patch करना चाह रहा हूँ, ठीक है. So first thing कि इसको I'll have to move it somewhere so that कि ये किसी से patch हो सके. So what could be that area? That is, as we do not have as such any specific space for this, so probably it will make quite a bit confusion या इस तरह की problem हो जाएगा. So the best what you can do is, yes, Zareen Taj, you wanted to say something? You have raised your Yep, sir. hand? Sir, I want to ask. Yeah, please. Yep, sir, I want to ask something. Yeah, please. सर ये जो आपने लेयर्स बनाई हुई हैं, मेरा एक्चुअली कल ही लैपटॉप आया है, Okay. तो आई हैव जस्ट ओपन फोटोशॉप. Okay. सो व्हाट हैपेंड कि जब जो मेरी लेयर्स हैं, वो लेयर्स जो है बिल्कुल, अगर आपने स्क्रीन पे देखें कि आपकी लेयर्स जो है एक के बाद दूसरी आती है, लेकिन मेरे लेयर्स में क्या है कि वो साथ साथ आती है, वो नीचे नहीं आ रही थी. आई हैव ट्राइड अ लॉट. Which of the version which you're using of the Photoshop? 2020. 2020. I don't think so. Is there anything like this? Lekin, there's a standard formula which you always have to remember while working on this Photoshop. जब भी कभी ऐसी environment में you get stuck, what you have to do is go to this Windows and workspace से जाके design पे click कर देना. ठीक है? This is something mandatory and for everyone. Like इसमें there are multiple options. For all of those who are working on 3D environments, उसके लिए environment different है, motions के लिए is different, painting के लिए different, photography के लिए different. So जब भी कभी आप ऐसी state में फंसे, it's better कि window से जाके workspace means जो आपके left, right panels and layers की scheme ये सारी की सारी, let's restore it to the design level, correct? So उससे क्या होगा कि things would be straight away exactly उसी format में आ जाएगी the way actually I'm working. Got it? Yes, sir. Do it, practice it at your end. अगर कोई confusion है, you can get back to me. Sure, sir. Thanks a Thanks. lot. Thanks. अच्छा जी. So what is the best which you can do? Yesterday what we have done is कि हमने इसके साथ ये जो already हमारे पास art board which has been opened up, हमने इसके साथ क्या किया था? We done couple of things जिनके साथ हमने इसके लिए थोड़ी सी वाइट स्पेस क्रिएट की थी. एंड हाउ कैन यू डू इट? यू जस्ट गो टू दिस image and canvas size, right? This is the canvas जिसके ऊपर we have to do certain experiments या work. So it's better कि आप इसको थोड़ा सा expand कर दें, ठीक है ना? So image and canvas size से कौन सी साइड आप let's suppose इसको expand करना चाह रहे हैं, that is something which you have to mention from here. And that is, let's suppose अगर ये center में रखते हैं, so that means कि approximately in the percentage size you are interested from all these sides, left, right, top, right, top left, right and bottom top right, दोनों साइडों से it would automatically be expanded to what? अगर ये 100% है तो let's suppose 120% and 120 हाइट एंड विड्थ आप इस तरह करके ओके करेंगे एंड ऑटोमेटिकली हैव अ लुक एट दिस. ये एरियाज इसके साथ से एंड
from every side. आपका जो आर्ट बोर्ड है दैट हैज बीन एक्सपेंडेड टू दैट लेवल कि जो आपको सपोर्ट कर सके। हमें किस लिए ये रिक्वायर्ड था? लेट सपोज हमने अगर इसका पैच बनाना है या इसकी कोई कॉपी करनी है तो वी नीड सम एक्स्ट्रा स्पेस जहां से हम ये पैच उठाएंगे। सो दैट वाज क्वाइट अ बिट कंफ्यूजिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स यस्टरडे। सो दे वर एक्चुअली कीप आस्किंग मी दिस कि ये नहीं हो रहा, एंड एट द एंड दे when they send the copy to me, at the end I realized कि अच्छा that was the problem। अच्छा, ड्यूरिंग दिस होल वर्क इफ यू फाइंड एट एनी टाइम कि आपका ये जो सिलेक्शन है दैट हैज ओवरलैप्ड या इसकी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं इसको पैटर्न को थोड़ा सा क्लोज लेके आता हूँ, दिस इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड यस्टरडे। आई टोल्ड यू कि आप शिफ्ट की के साथ इसको थोड़ा सा ऐड कर दें, ठीक है ना। अभी भी अगर नहीं हो रहा तो शिफ्ट की प्रेस किया आपने और इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि इसको पैच करेंगे टूवर्ड्स दैट साइड। अभी भी हालांकि इसमें स्पेस इज क्वाइट अ बिट कंफ्यूजन है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से ये नहीं करेगा। सो दैट्स इवन नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम जस्ट गिविंग यू द एक्सपेरिमेंट। आप इस तरह से किसी भी एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को लेट सपोज थोड़ा सा यहाँ एंड दो तीन दफा एक्सपेरिमेंट करने से यू फाइंड आउट के इट वुड बी वाइप्ड आउट, ठीक है ना ऑटोमेटिकली। जिस जिस हिसाब से आप दो तीन दफा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये पैच एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर आपके पास 100% परफेक्ट शेप में आ जाएगा। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू फाइंड आउट के दिस इज नॉट वर्किंग फाइन, इसकी सिलेक्शन को यू कैन डू इट, रीडू इट, दोबारा से इसको पकड़ें और इसको पैच करें, दिस विल डेफिनेटली वर्क, correct? So as I've done it right now, you can see that it's 100% wiped out. So this is something. The second thing which was actually inside, let me undo this first so that कि हम अगले experiments की तरफ चल कर सकें। Let me undo this, and that is something by default which we are back with this one। अच्छा, spot healing is exactly like let's suppose if I'm interested in healing, let's suppose अगर आप इतने से एरिया को आप हील करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ माउस के कर्सर को उसके ऊपर लेके आएंगे, ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट इसकी सराउंडिंग का एरिया है वो खुद ब खुद उसको कैप्चर करेगा और ये सारा का सारा आपके सामने। सॉरी, ये स्पॉट हीलिंग नहीं है, दिस इज रॉन्ग विच आई एम डूइंग, सो लेट मी अनडू दिस एंड स्पॉट हीलिंग, या दैट्स द वन। अच्छा, स्पॉट हीलिंग जैसे ही आपने एरिया इसको चूज किया, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज कि इसका जो ब्रश का या जो टारगेट का साइज है इसको यू हैव टू extended the size from this here is from 64 to, let's suppose we go to around 100, right? Let's say 99 and this is approximately 100। so let's see what is the outcome। आप just इसके ऊपर इसको place करें and automatically the system works of this Photoshop और वो automatically इस सारे के सारे एरिया को आपके सामने जस्ट एक सिंगल क्लिक के ऊपर इस सारे को 100% आपके लिए क्लियर करके पैच्ड एज एन पैच टूल की द सेकेंड एपिसोड ये आपको करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सारा का सारा उठाता हूँ और ये देखिए एक सिंगल क्लिक के ऊपर ये अभी एग्जैक्ट नहीं कर सकेगा बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम विच इज स्टिल वी फाइंड आउट के ये मिस हो गया है। लेकिन ये दो तीन दफा आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इस तरह के, सो ऑटोमेटिकली दैट विल बी वाइप आउट। अच्छा, teach us about pen tool in detail, please? No, Froze, I would request कि it's better कि I have already uploaded the previous lectures. There are two lectures related to the pen tool. अगर आप उनको go through करें तो you will find out multiple options। उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप बड़े easily go through कर सकते हैं, ठीक है। So first try that। अगर वो ना हुआ तो then you can ask me, correct? आई एम प्रिटी श्योर कि वो इतनी डिटेल में सारे के सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसमें देयर इज नथिंग एज सच स्पेसिफिक। अच्छा जी, द लास्ट टूल इसमें दैट इज द रेड आई। रेड आई बेसिकली क्या होता है कि जब व्हेन यू टेक अ पिक्चर इन द डार्क एरिया तो आईज में एक रेड सा सर्कल आ जाता है। सो यू कैन जस्ट पिक अप दिस टूल और आईज के ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है और ऑटोमेटिकली ये उसका जो Achas. Afroz is saying that I tried everything several times but failed. Okay, no problem. We'll get back on this. ठीक है, no problem. चले जी, अभी for the time being, अच्छा, there's another student जिनको भी ये पेन टूल का नहीं, okay, okay,
कल की रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड नहीं की, ओके, me too. So that means pen tool is still creating problem. But today, as we are discussing something different, so इसके ऊपर मैं at the end आऊंगा. ठीक है, so no worries about this. इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, पेन टूल को भी, और ओके एग्जैक्टली इससे तो माशाल्लाह लगता है सारी की सारी क्लास ही इस इंतजार में बैठी हुई है दैट वी शुड रीडू इट, वेयर एज आई एम नॉट सपोज टू रीडू इट बिकॉज इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है सारी की सारी क्लास से, लेकिन देयर इज स्टिल नो प्रॉब्लम, वी विल डू इट अगेन. अच्छा जी, अब आ जाते हैं, देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड दैट इज द इरेजर टूल. इरेजर टूल एज यू ऑल नो कि अगर आप जाएं इसको थोड़ा सा ब्रश साइज को बड़ा करें, यू फाइंड आउट कि इरेजर क्या करता है. इरेजर बिल्कुल सिंपली इसको वाइप आउट कर देता है. फर्स्ट, द सेकंड थिंग इज कि लेट्स सपोज अनडू करते हैं और डी प्रेस करते हैं एंड दिस इज समथिंग व्हिच कैन वेरी इजीली डू. द अदर थिंग इज इसी में बैकग्राउंड इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर में क्या करेगा, वाइट वाले एरिया को ऑटोमेटिकली वाइप आउट करना शुरू कर देगा. लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग वुड बी जब आप इसी किसी डिटेल पे आएंगे तो हैव अ लुक एट दिस कि ये टूल पिक करने से नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बड़ा केयरफुली कि जो बैकग्राउंड है सिर्फ वो रिमूव हो रहा है इसमें. करेक्ट. सो गौर से देखें कि इन पेटल्स के अंदर अंदर जो लोगो है, लोगो के अंदर जो जगह हैं वो सारी की सारी बिल्कुल एब्सोल्युटली जो वाइट एरिया है वो दरम्यान से वाइप आउट होता जा रहा है. सो जब भी कभी आपको इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे ऐसे किसी एरिया को वाइप आउट करना पड़ जाए, दिस वन टूल इज डेफिनेटली वर्किंग एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. अच्छा, इसमें जो ट्रिक है वो ये देखने वाली है कि जो सेंटर पॉइंट है ना आपका, इसको कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा देर आपने वाइट एरिया पे रखना है, इसको फर्दर किसी और कलर पे नहीं लेके जाना. राइट. एज ये एक सर्कल के दरमियान में सेंटर में एक सर्कल है, मैं उसको वाइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ और ये ऑटोमेटिकली वाइट को वाइप आउट करता जा रहा है. सो जस्ट इतनी सी केयर आपने रखनी है एंड ये सारा का सारा पूरा का पूरा लोगो आप बेशक आप जल्दी से जाएं और जल्दी से करते 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 इस पूरे के पूरे लोगों को आप वाइप आउट कर दें. Correct. So this is one very classic example of erasing background tool. So I just thought कि ये भी चलते चलते आप लोगों को क्लियरली ये भी बताता जाऊं. ये देखें, ये नीचे टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अंदर से भी इसने बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लीन सारा कुछ वाइप आउट कर दिया. ओके जी, देन उसके बाद लेट मी अनडू दिस, अनडू विद, सॉरी, क्लिक एंड अनडू एंड वाइट वापस अगेन. ठीक है. सो let me zoom it out a little bit and then उसके बाद there's another very interesting and that is the magic eraser tool. Magic eraser tool क्या करता है, just on single click सारा का सारे इमेज को white wipe out कर देगा. Click and here we go. The only thing remaining is this and click here and here we go. Now what you can do is you can zoom it in एंड हैव अ लुक एट दिस कि कितने क्रिस्टल क्लीन तरीके से जस्ट ऑन सिंगल क्लिक इसने सारा बिल्कुल वाइप आउट. ये देखिए, ये थोड़ा सा रह गया, क्लिक क्लिक एंड वी आर ऑल सेट, डन. अब आप क्या करें, अब आपने बहुत सिंपली सीधा जाना है नई लेयर के ऊपर, क्रिएट अ न्यू लेयर एंड विद लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर इज anywhere which is different to this. Let's suppose हम जाके येलो इज नॉट इन दिस, सो लेट्स सी, हम येलो कलर पिक करते हैं, इसमें आल्ट बैक स्पेस से प्लेस करते हैं और इसको ड्रैग करके नीचे ले आते हैं एंड हैव अ लुक एट दिस. बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन आपके सामने पूरा का पूरा लोगो, बिल्कुल एब्सोल्युटली. अब आपके सामने ये जो चीज है लाइक लोगो या वट जिस चीज को भी आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, उसको सिंगल क्लिक के ऊपर फर्दर यू कैन डू इज कि इसके ऊपर जाके एक्सपेरिमेंट अब आप करेंगे, इसका शेडो लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली एज इट इज जो ये वाला सारा एरिया है आपका लाइक इट्स अ ट्रांसपेरेंट वन, तो ऑटोमेटिकली इसका शेडो विल बी अप्लाइड. ठीक है, ये देखें गौर से, अगर थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करेंगे सो ऑटोमेटिकली you will find out that it is absolutely working perfectly fine. Right. So that is something which you can easily do. That is in the eraser tool. Okay, इसी के सामने that is another brush tool. अच्छा जी, brush tool के लिए सिंपली ब्रश टूल क्या करता है, ब्रश टूल एज लेट मी
create a new layer first, or let me close this one and create a new layer so that कि हम इसके ऊपर experiment कर सकें. Again, brush tool usually have when it is required कि जब आपकी digital illustrations या पेंटिंग्स या इस तरह की कोई चीज़ आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये टूल ज़्यादातर यूज़ होता है. एंड इट इज़ सो सिंपल, लाइक किसी तरह का आप ब्रश टूल का साइज पिक करें एंड जस्ट उसकी जो भी कलर आप पिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये उस तरह का ब्रश से ये आप प्लेस करते जाएं और ऑटोमेटिकली ये वो वाली चीज़ आपके सामने एज जिस तरह ब्रश काम करता है बिल्कुल वैसे ही आपके सामने ये क्रिएट करना शुरू कर देगा. ठीक है. अब इसके फर्दर ऑप्शंस के हैं. फ्लो में अगर जाके इसको 100% कर देंगे सो ऑटोमेटिकली ये फ्लो में 100% येलो इसमें ऐड होना शुरू हो जाएगा. बट यूजुअली विद दिस हैपेंड इज कि हम इसकी फ्लो को भी थोड़ा कम रखते हैं सो दैट के हमारे पास जो इसकी फाइननेस है लाइट कलर की वो सारी की सारी डिटेल में आती रहे. बिकॉज हमें देयर इज नो प्रॉब्लम, हम दो दफ़ा ब्रश को यूज़ कर लेंगे, दो दफ़ा प्लेस कर देंगे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम फ्लो को इतना डेप्थ या इतना डिटेल में प्लेस कर सकें. सो दिस इज वन थिंग. करेक्ट. इसके अलावा ब्रश टूल के अलावा पेंसिल टूल, एज यू ऑल नो कि पेंसिल टूल इज लाइक पेंसिल टूल. लेट्स सपोज अनडू, मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेता हूँ सो दैट कि आपको ये नजर आ सके. राइट. सो दिस इज पेन टूल. ऑटोमेटिकली कोई भी चीज आप इसके साथ प्लेस करना चाहें यू कैन डू इट. एंड द अदर डिटेल्स विच आर एक्चुअली अवेलेबल विद दिस, आप इनमें से जाके किसी के साथ भी प्ले कर सकते हैं. ठीक है ना. सो दिस इज समथिंग वेरी इजी टू यूज हैंडी टूल फॉर pencil. And pencil is normally by default it is like to create something like this. ओके ना. सो आप कोई भी चीज एज एन फ्री स्टाइल में क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पेंसिल एंड ब्रश दो टूल यूज होते हैं. कलर रिप्लेसमेंट टूल, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. कलर रिप्लेसमेंट टूल क्या करता है? क्वाइट ऑब्वियस. कर दें. आई एम जस्ट ज्वाइनिंग द क्लास. Who is this? Finecom, I don't know. Lekin the recording has been on, no worries, and inshallah the recording will be shared to you. As we have done multiple things, so I just want कि आप repeat मुझसे ना करवाएं, आप recording को go through करें, है ना? Okay, right, sorry, है ना? इसको आप go through करें recordings को, कोई confusion हो तो we can again discuss. And by the way, this is just a recap of the class. कुछ हमने recap किया और कुछ pending चीजें थी वो हम आगे आज कर रहे हैं. Okay, Ji. So what is next? We were discussing about under this brush tool, and that is the color replacement tool. Okay, color replacement tool is another very interesting tool. Be careful while selecting this. Very important. इसकी settings से जाके, as soon as you select this one, first and foremost, we don't need this one. Okay, and we might need this one, लेकिन we are not interested. जो हमने इसके ऊपर for the time being experiment किए थे drop shadow वाले, वो सारे के सारे मैं ऑफ कर देता हूँ. एंड दिस इज द लेयर जिसके ऊपर हमने अपना एक्सपेरिमेंट करना है कलर रिप्लेसमेंट टूल का. फर्स्ट कि यू हैव टू पिक दिस वन बिकॉज ये दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट टूल. रिप्लेसमेंट टूल में लेट्स सपोज वी आर इंटरेस्टेड कि ये जो पैटर्न्स हैं इनको हम वाइट कलर प्लेस कर दें. सो लेट मी डू दिस वन. फर्स्ट गो टू दिस साइज, थोड़ा सा हम बड़ा पिक करते हैं एंड हैव कलर, सॉरी, कलर रिप्लेसमेंट है इसलिए व्हाइट इज नॉट एज सच. हमें कोई ना कोई कलर यहाँ से पिक करना पड़ेगा. सो लेट्स सपोज व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन पिक दिस कलर एंड लाइटर कलर, लाइट कलर, और जस्ट इसके ऊपर देखें प्लेस करता जा रहा हूँ मैं एंड इट इज जस्ट रिप्लेसिंग द सेम कलर वन. एंड एक सिंगल क्लिक के ऊपर सारा कुछ चेंज होता जा रहा है. इजीएस्ट वे कुड बी कि आप जाके इसका साइज थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दें सो दैट कि ये सारा वन गो में इसके अंदर आ जाए. एंड हैव अ लुक एट दिस. अच्छा, ये मैंने क्यों किया? फर्स्ट आई ट्राइड कि मैं इससे मैच कर सकूं. द सेकंड वन आई वुड ट्राई कि मैं इससे मैच कर सकूं. सो आई ड्रॉपर टूल से व्हाट आई डू इज कि मैं अब कल सिलेक्ट कर लूंगा कलर ये वाला. राइट. So as now this color has been selected, go to the color replacement tool and जाके have a look at this. लेकिन बी वेरी केयरफुल while doing this कि by default जो background का कलर है if that is dark, so by default this will act, जो भी कलर आप चूज करेंगे it will act and apply as a darker color on it, right?
और अगर लाइटर कलर है तो ऑटोमेटिकली उसको भी थोड़ा सा ये 100% नहीं लेकिन ऑलमोस्ट उसी शेप में ले आएगा. Correct. So I think that is the color replacement tool or mixer brush tool as such कुछ ज़्यादा इसकी इतनी importance नहीं है, इसलिए I just do not want. The other important thing which I'm mainly interested, जिसमें मुझे आप लोगों की help ज़रूरत होगी, how can I redo this? Let's suppose if I'm interested कि ये सारी की सारी चीज़ this should have been placed exactly at this point. How can I do this? So that कि आप थोड़ा सा practical उसकी तरफ आ जाते हैं. Is there anyone who can just guide me what could be the right tool जिससे हम either the missing thing is just at the top one. चले let me put it this way. ये top वाला जो petal है इसको how can exactly we place somewhere here? Anyone who can just either chat box, quick selection tool, okay, one option. अस्मा ओके डन. अहमद आप चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करो. स्टैम्प टूल इज अनदर ओके दैट इज वन ऑप्शन राइट. Very good. Interesting. Very good. Path tool, yes, exactly. Stamp tool, okay. Very good. Very good. Keep on writing. Keep on doing. Patch is yes. Patch exactly. इसको patch करना है copy से. Yes, that is also lesser tool. Yes, very good. Good to know. Very good to see कि students having so much experience now, they know कि ये different tools are working for different purposes. So for example, let me start with this lasso tool first. देखो multiple tools are for now you can very easily assess कि कौन सा tool इसमें ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है. Stamp tool भी कर जाएगा, lasso भी कर जाएगा, patch भी कर जाएगा, simple copy paste भी कर जाएगा. Let me tell you, simple copy paste be definitely that will work. Okay, so how can we do it? भाई जस्ट इतना से एरिया को आप सिलेक्शन करें एंड अगर आप इस एरिया इस वाले स्क्वायर से सिलेक्शन करने जाएंगे तो व्हाट डू यू थिंक दिस वुड बी सिलेक्टेड? आई थिंक हो ही जाएगा काम इससे भी. लेट्स सपोज दिस वन और यहां से इसको करते हैं छोटा. करेक्ट. सो दैट इज समथिंग. लेयर इज सेम. कंट्रोल सी and control V. Correct. So now V is in the new layer and let's see कि इसने पेस्ट किया कि नहीं किया. अच्छा जी, अब हम लाते हैं इसको स्ट्रेट एग्जैक्टली इस जगह पे. इज देयर एनीवन हु कैन जस्ट गाइड मी? आपने आप में से किसी ने भी कॉपी पेस्ट जो सबसे सिंपलेस्ट टूल था वो अप्लाई नहीं किया. सो आई जस्ट गिव यू अनदर ऑप्शन नाउ कि कॉपी पेस्ट सिंपल कंट्रोल सी एरिया सेलेक्ट करें कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी मीन्स के एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर पेस्ट हो गया. नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि मैंने इसको ड्रैग करके लाना है ऑन द अपोजिट डायरेक्शन. सो व्हाट कुड बी द राइट टूल? मैं अगर इसको मूव करूंगा यहां से तो दिस कैन बी मूव्ड एनीवेयर. ठीक है ना. सो व्हाट कुड बी द की जिसको मैं प्रेस करने से स्ट्रेट एग्जैक्ट बिल्कुल इसके सामने ले आऊंगा. कंट्रोल टी इज फॉर ट्रांसफॉर्म. नो अनम नो. शिफ्ट की शिफ्ट की शिफ्ट की ओके. और इसके अलावा परफेक्ट परफेक्ट एब्सोल्युटली नेल डाउन 100% करेक्ट. शिफ्ट की से माय डियर स्टूडेंट अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके इसको या इसको पहले पिक करके शिफ्ट की प्रेस कर दूंगा दिस विल डेफिनेटली स्ट्रेट अवे कम्स हियर. ओके. ये मैं देखें माउस मेरा इधर या उधर या नीचे जाएगा या जिधर भी जाएगा ये आएगा बिल्कुल 100% स्ट्रेट. Let's suppose that was the location. Now guide me the next process. How can I rotate it? अब मैं कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करूं टुवर्ड्स द अपोजिट साइड? हरी अप. नो आइडिया. So that as we are not having any answer, असवंत शिफ्ट की से तो हमने मूव किया बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि हम इसको रिवर्स कर दें. इंस्टेड ऑफ ये शेप इस तरह के बजाय ये शेप ऐसे हो जाए. ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम इसको. ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं? दी शॉर्ट की इज नो शिफ्ट से नहीं
Control plus T transform first, sorry. Layer number 2 is this one, yes. And control plus T से transform करेंगे. Left mouse, okay. Control T, I don't know क्यों नहीं हो रहा. Just hold on a second. There are students. Had Khan is a disturbing guy. Yes. And now control T is for transform. Abdullah Khan, yes, please. What do you want to say? Abdullah, you have raised your hands. Nothing. So that was just a hit and trial. So मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको zoom control plus plus से and let's suppose मैं shift की sorry space bar की से मैं इसको pan कर देता हूँ so that कि हमारी ये selection would be, because that is the area on which we are working right now, so we are mainly interested कि इसकी zoom करके हम इसके पास चले जाएं. So control T is for transform, right click and flip horizontal. Okay, so shift की से दोबारा select करें इसको and let's make it somewhere here. So do you think it is almost to the same size? Almost at the same size? Okay. Yes, absolutely. Okay, Abdullah, no problem. Yes, Anam Fatma, you want to say something? Anam, why are you raising your hands? I can't hear you. हेल- हेलो सर. Yes, Anam? यस सर, ये मैंने पूछना था कि जो आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया है तो हम उसको पहले सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे. मुझे Have a look समझ at this. Have a look at this. पार्ट. ये देखें, जी जी. इस लेयर में से मैंने इसको कॉपी किया था. That ठीक है was layer सर. number 0. Okay. ठीक है. And ठीक है. control C से I just made a copy. अब आपके पास ओके. लेसो टूल भी है. आप लेसो टूल की मदद से भी इतने से एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं. करेक्ट. देयर आर मल्टीपल ठीक है. वेज. जो टूल आपको ज्यादा इजी लगे. नाउ द सिलेक्शन हैज बीन डन फ्रॉम दिस एरिया. व्हाट आई हैव डन इज कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल वी. ये देखें नई लेयर में ये पेस्ट हो चुका है ऑलरेडी. राइट. सो ठीक. इसको ठीक है. मैंने इधर लेके आने के लिए व्हाट आई हैव डन इज के शिफ्ट की के साथ में एग्जैक्ट इस जगह पे लेके आया. ओके. ठीक एंड है. कंट्रोल टी इज फॉर ट्रांसफॉर्म, मींस एडिट से दैट इज फ्री ट्रांसफॉर्म. ओके. एंड राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया. ठीक है. थैंक यू Correct? सर. ओके. Okay, thank थैंक you. यू. So that means that has been done. So double click, okay, enter. तीन चीजें हैं, three keys के से आप इसको you can make it done, right? अब आपने next process है कि आप इसमें ये वाला color कैसे fill करना है. So that is the last job जो कि आज जो मुझे guide कर देगा इलेक्ट्रा टेलीविजन उसका. Please in the chat box you can just let me know how can I make the same color. Like this is जो हम कर रहे थे for the sake of exercise हमने ये last किया. So let me let me off it या let me delete this layer first so that के कोई confusion ना रहे. Eyedropper tool is one. Excellent. One option is eyedropper tool. Okay. What else? एक ऑप्शन हमने आज डिस्कस की थी, replace color. 100%, very well done. Color replacement tool, very well done. So color replacement tool say, so that is what I was looking for. Asma, well done. Maham, excellent. Asma, eyedropper. Had Khan, very well done. ठीक है ना. जो आज की हम बेसिकली जो क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज थी, जो चीज आपने आज डिस्कस की, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज देयर आर मल्टीपल वेज. फर्स्ट, लेट सपोज मैं जाके इतने से एरिया की करता हूं सिलेक्शन, एंड वो सिलेक्शन मैं करता हूं किसी भी रैंडमली किसी भी ऐसे टूल से विच इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस. नाउ
एज यू सी कि ये वाला एरिया है और इसको मैं जाके यहाँ से कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी को लॉक. सो दैट मीन्स कि ये पिक्सल जो ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे हैं, दीज आर लॉक्ड, इनके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं होगा. द ओनली कलर विच इज इनसाइड सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन अप्लाई क्या होगा, दैट इज द कलर वी हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट. राइट नाउ दिस कलर इज नॉट देयर. सो विद द हेल्प ऑफ आई ड्रॉपर टूल, करेक्ट, हम यहां से करते हैं इस पे क्लिक. नाउ दैट कलर हैज बीन सिलेक्टेड एंड Alt plus backspace and here we go. Done. Let me undo this. Control D is for deselect, and let me give you another option. That is first initially the most difficult कि मैं इतने सारे एरिया को सिलेक्ट करूं, and again transparency lock and Alt plus backspace and Control Z means undo. This is the second option. The third option is कि quick selection tool. Quick selection tool से मैंने ये सारा का सारा select किया, लेकिन keep in mind कि somehow sometimes quick selection tool doesn't work perfectly. So that is very much your choice कि अगर आप इसमें से आप इसको माइनस करना चाहते हैं Alt की के साथ, ये थोड़ा थोड़ा करके माइनस करते जाएं एंड ऑटोमेटिकली रिमेनिंग एरिया आपका बच जाएगा. सो दैट इज जस्ट वन टूल. लेकिन अगेन अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके क्लोजर चले जाएं, यू फाइंड आउट कि ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल अभी भी इसमें रिमेनिंग है, सो इट्स बेटर वी शुड नॉट यूज दिस टूल. राइट, दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स के जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं, whenever you got stuck in any such situation, you find out that this tool is not working or this is not applying perfectly, there are replacement for those tools, correct. And let me undo this और हम जाके color replacement tool से that is the color replacement tool, हम जाके simple color replacement tool से इस view पर apply कर देंगे and that is something we are done with this, right? Let me controls minus means 100%, and the shortcut key for zoom out control plus 0 means 100%. जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम विजिबल नजर आ रहा है वो सारा सारा आपके सामने विजिबल हो जाएगा. सो आई होप कि आज का सेशन वाज मेनली वेरी प्रोडक्टिव. अब आ जाते हैं हम आज के बेसिक जो क्यूरी थी एंड दैट वाज अगेन द पेन टूल. कल हम थोड़ी सी फर्दर ये तीन चार और चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन पेन टूल विच आई मेनली इंटरेस्टेड के सारे के सारे इसको गो थ्रू करो एंड बात बात करो. सो आज की रिकॉर्डिंग में फर्स्ट इज दीज 2-3 टूल्स जो कि मेन इंपॉर्टेंट टूल्स थे. फर्स्ट वाज द पैच, द सेकंड वाज द ब्रश, and this third was the eraser tool. Eraser tool के अलावा just to give you further experiments, we are going to give you the experiment on pen tool.